Welcome back, students. Today is the session number 9 from the chapter of electric charge and field, and the topic is application of Gauss law. And here we will be discussing two examples which I have written on this board. Now, the Gauss law is used to find the intensity of electric field due to some symmetric charge configurations, and so I will be discussing the same thing here with the help of these two examples. Now यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर ये मैंने एक इनफाइनेटली लॉन्ग एक सिलेंड्रिकल वायर लिया है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मैंने यहाँ पे लिया है लेमडा. ठीक है. तो अगर इसका नाउ आई हैव कंस्ट्रक्टेड हियर एक यहाँ पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमको एक इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा. तो ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस स्मॉल r. ठीक है, यहाँ पे. और इस तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंस्ट्रक्टेड ए गॉसियन सर्फेस. ये गॉसियन सर्फेस बोलते हैं. ठीक है, ये जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है. तो दिस इज ए गॉसियन सिलिंड्रिकल सर्फेस और दिस पॉइंट P इज लाइंग ऑन दैट सर्फेस. आप देख सकते हैं. नाउ सिंस दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज this wire, therefore the electric field lines will be directed outward and it will be perpendicular to this cylindrical surface, this Gaussian cylindrical surface. ठीक है. तो वो मैंने यहाँ पे जो है डायरेक्शन बनाया हुआ है this E. ये आप देखेंगे. तो this the direction of this E is outward and it is perpendicular to this cylindrical surface. अब हमें we will find the intensity of electric field at this point P using the Gauss law. Now Gauss law क्या कहता है? Gauss law कहता है कि the flux through any closed surface is given by, that is phi is equal to Q upon epsilon naught, where Q is the charge enclosed by that surface, and so we will be using this formula in order to find the value of E at this point P. तो कैसे निकाल सकते हैं ना? phi की एक और फॉर्मूला है, phi is equal to E S cos theta. So E क्या है? This is the magnitude of the this electric field at this point P. S क्या हो जाएगा? This will be the surface area. तो surface area यहाँ पे क्या होगा? Basically that it will be the surface area of this cylindrical Gaussian surface. So यहाँ पर and theta क्या है? Theta is the angle between the direction of this electric field E and the normal to this cylindrical surface. ठीक है. तो normal to the cylindrical surface है तो ये आपका cylindrical surface है. normal क्या होगा? This will be in this direction जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है. E का भी डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा. नाउ जो फ्लक्स है, फ्लक्स यहाँ पे ये जो सरफेस है मैं इसको मानता हूँ लेट अस से दिस, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसको मैं ले लेता हूँ A. एक यहाँ ऊपर देखेंगे आपका कर्व पार्ट है कि नीचे भी है, इसको B ले लो आप और इसको ले लो C. ठीक है. नाउ यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर सी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस, ये इस प्रकार से है यहाँ पर. ठीक है. और यहाँ पे भी जो है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी प्रकार से है, ये है. बट द नॉर्मल टू दिस कर्व्ड सरफेस दैट इज B एंड C, वो क्या होगा? दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ऐसे C के केस में भी जो है नॉर्मल इज दैट इज द नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस will be in this direction and it will be perpendicular to E. Similarly, the normal to the curved surface that is C will be perpendicular to the direction of E. So in this case, तो हमारा जो phi है basically phi होगा that is equal to flux due to the curved surface A plus flux due to the curved surface B plus flux due to the curved surface C, which is equal to Q upon epsilon naught. ठीक है.
नाउ द फ्लक्स ड्यू टू द सरफेस बी एंड सी, ये आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा की वैल्यू हो रही है 90. द नॉर्मल टू द सरफेस और द डायरेक्शन ऑफ द ई के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे द डायरेक्शन बिटवीन द this electric field E and the normal to the curved surface that is C, that is the curved surface C, that is equal to, इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री. So cos 90 0 हो जाता है. So the flux through this curved surface B and sorry this is C and the curved surface C that will be equal to 0. तो ये तो 0 हो गया. अब इसका क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया है, ये जो आपका दैट सिलिंड्रिकल पार्ट है, यहाँ पर क्या है, द नॉर्मल टू दिस सरफेस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई. सो ये हो जाएगा, इसके वजह से जो दैट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सिलिंड्रिकल पार्ट, दिस विल बी इक्वल टू ई एस, कितना हो गया 2 पाई आर इंटू, बिकॉज दिस सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलिंड्रिकल पार्ट will be equal to 2 pi r into L, where L is the length of this Gaussian surface. ये जो हमने लिया L लिया है, and R क्या है, R is the distance of this point P from this wire. ठीक है. तो जब हमने जब ये Gaussian surface यहाँ पे जो हमने बनाया है, so it is in the form of a this cylinder है, तो उसकी वजह से ये जो S की वैल्यू आ रही है, that is the surface area of this cylindrical part, that is A, is coming out to be 2 pi RL. ठीक है. and this is equal, अच्छा इसमें क्या है, and this will be equal to cos theta. theta इस केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा. so cos 0 is equal to 1. so ये आपका आ गया E है. this is equal to Q upon epsilon naught. so now Q क्या होगा, यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखी हुई है वो लैम्डा है. so Q will be equal to lambda into L, because lambda is equal to what, linear charge density means Q divided by the length of the wire. so Q will be equal to lambda L. so हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं lambda L divided by epsilon naught. so अगर हम दोनों इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, so E will be equal to, ये lambda और lambda L हो जाएगा, सॉरी दिस L और L कैंसिल हो जाएगा, and we will be getting E as lambda divided by 2 pi R into epsilon naught. so the value of this the value of the electric field, or you can say the intensity of electric field at this point P, which is at a distance R from this wire, is given by lambda divided by 2 pi R into epsilon naught. so हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि E is proportional to lambda, और दूसरा है E is inversely proportional to 1 by R, where R is the distance of the point at which we have to find the value of this electric field. जैसे जैसे ये R की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे E की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है, तो E की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी. So this is the formula. That is the electric field E due to an infinitely long uniformly charged wire having a linear charge density which is equal to lambda is given by lambda divided by 2 pi R into epsilon naught, where R is the distance of the point from that wire at which we have to find the intensity of electric field. Now let us take the second case. Here I have taken another example in which there is a spherical shell and the charge is uniformly distributed over its surface, and that surface charge density is given by sigma. The radius of this spherical shell is r, and now we have to find the, you can say the
value of this electric field, let us say at this point P. So ये जो point P है, I have taken it to be at a distance r from the center of the sphere. ये मैंने r है, ये आपका distance r हो गया. So again we will be using the same formula, that is flux through a closed surface is equal to q upon epsilon naught. So now phi कितना हो जाएगा? Phi will be equal to E s cos theta. Again theta की वही, theta is the angle between the direction of the electric field and the outward normal to the surface. So अगर हम ये now what I have done is I have, जैसे हमने यहाँ पे किया था, जिस पॉइंट पे हमें E की वैल्यू निकालनी है वहाँ से हमने एक गॉसियन सरफेस को जो है वहाँ पे मैंने बनाया. So this dotted line is the Gaussian surface which is enclosing that point P where we have to find the value of E. ठीक है, तो ये हो गया मेरा Gaussian surface है. अब now इस Gaussian surface का जो surface area है वो क्या हो जाएगा? That will be equal to 4 pi r square. ठीक है ना, because this is spherical in shape. Theta that is the direction of the outward normal to this Gaussian surface, and the direction of the electric field E. Theta is the angle between the outward normal at any point on the Gaussian surface and the direction of the electric field E. तो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है, so theta की वैल्यू again it will be 0, so we will be getting that phi will be equal to E. S क्या है? 4 pi r square. Now this is equal to q by epsilon. Now यहाँ पे इसके ऊपर जो इसका जो surface charge density है that is equal to sigma है, तो हम इसको लिख सकते हैं, it implies that E 4 pi r square will be equal to, now q क्या हो जाएगा? If the surface charge density is equal to sigma, then q will be equal to sigma into area, because surface charge density जो होता है sigma is equal to q upon a. ये फॉर्मूला है. तो q will be equal to sigma into a, and a यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is a sphere, so it will be equal to 4 pi r square divided by epsilon naught. So यहाँ से 4 pi and 4 pi cancel हो जाएंगे. So it implies that the electric field at this point P, due to this uniformly distributed charge having a charge density of sigma, will be equal to density, that is surface charge density, into r square divided by r square, that is a small r square, into epsilon naught. ठीक है, ये आ गया. So this is the value of E at this point P. Due to this uniformly charged sphere having a surface charge density of sigma. अब हमें सिग्मा भी पता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, है ना. सिग्मा यहाँ से आप देखेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए. ए क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है स्फीयर का, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड ये आपका हो जाएगा आपका इंटू आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. So finally what we are getting, r square and this r square will get cancelled out, and sigma है, ये r square है, and q upon a is equal to 4 pi r square हो गया. Sorry, sigma, हाँ या ठीक है. So this is what we are getting is equal to q divided by 4 pi r square epsilon naught. ठीक है.
यहाँ पे हमने क्या किया, we have found the flux, that is the flux through this point P is equal to E into 4 pi r square, ठीक है, and this is equal to Q upon epsilon naught. Q क्या हो जाएगा, Q will be equal to that is equal to that is this sigma into the this surface area, ये मैंने डाल दिया, divided by epsilon naught, ठीक है. ये मैंने गॉस लॉ है, ये दिस इज द गॉस लॉ, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड यहाँ से फिर हमारा 4 पाई कैंसिल हो गया. सो वी आर गेटिंग ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से मैंने सिग्मा की वैल्यू फिर से डाल दी, विच इज इक्वल टू क्यू बाई ए. क्यू है, ए क्या हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो फाइनली द वैल्यू ऑफ ई at any point P which is situated at a distance r, ठीक है, which is situated at a distance r from the center of the sphere, ठीक है, is given by Q divided by 4 pi, that is small r square into epsilon naught, ठीक है. So in this way we can find the value of the intensity of electric field due to many symmetric charge configurations. And यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 examples को जो है cover किया था. There are many other more examples. You can find the value of E due to an infinitely long these sheets. You can find the value of this electric field, ठीक है, through this at any point P due to, you can say, due to a small cube. So there are many symmetric configurations, and you can easily find this intensity of electric field due to those symmetric charge configurations with using the Gauss law. So thank you very much for joining this session, and I hope you have understood what we have studied in this session. And in the next session I will be coming up with a couple of questions based on this application. So thank you very much and have a nice day. Bye.